Hello all, this is Ankita and today we are going to learn about a very important concept which is imagination. Now what is imagination? When you think about imagination, is it just daydreaming or is it something creative? Is imagination a basic quality of every human being or is it something which is a gifted quality? What dimensions of overthinking can be called as imagination? What exactly is imagination in terms of literature? We are going to learn today in this class. So, imagination is a very important concept which was given by Samuel Taylor Coleridge. So, for Samuel Taylor Coleridge, imagination is not escape from reality but a creative shaping power of mind. Samuel Taylor Coleridge कहता है इमेजिनेशन रियलिटी से भागना नहीं है. इमेजिनेशन एक क्रिएटिव प्रोसेस है जिसके थ्रू माइंड कुछ नया इन्वेंट करता है या कुछ नया क्रिएट करता है. इट वॉज अ रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिसिज्म, रूल्स, ऑर्डर एंड रीजन. एंड एम्फोसिस was on emotion, nature and creativity. Of course, because imagination is a concept which was given during the Romantic period and hence it was a movement against the previous age, which was the neoclassical age, which focused a lot on rules and regulations and reason and order. And here the focus was on emotions, nature, creativity. The concept of imagination and its various types was made famous by Coleridge in his work Biographia Literaria. ये जो imagination का concept है ये Coleridge ने propagate किया था इसके काम Biographia Literaria में in 1817. Now Coleridge divided imagination into two types. One was the primary imagination and another was the secondary imagination. Now talking about the primary imagination, what is the primary imagination? So primary imagination is the living power and the prime agent of all human perceptions, right? ये एक living power है और prime agent है all human perceptions में. मतलब प्राइमरी इमेजिनेशन हर ह्यूमन बीइंग में अवेलेबल है. ये एक यूनिवर्सल है जो हर ह्यूमन बीइंग में अवेलेबल है. इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमंस. इट इज़ इनवॉलेंट्री इन नेचर, ये नेचर में इनवॉलेंट्री है एंड हेल्प्स टू सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. तो प्राइमरी इमेजिनेशन हर इंसान में अवेलेबल है. ये एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है हर इंडिविजुअल की. ये यूनिवर्सल है, ये इनवॉलेंट्री है और ये ह्यूमन बीइंग को, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. It is the living power of perception. Now, but talking about the secondary imagination, it is the echo of the primary imagination, but it is conscious and creative, right? ये echo है primary imagination का. Primary imagination is the basic imagination. Moving forward, the upward level is the secondary imagination. It is the echo of the primary imagination, but it is more creative, right? It is more conscious, right? It is more voluntary in nature. It is not something which is involuntary. This is higher level of imagination which dissolves and recreates reality, right? ये reality को recreate करती है. Dissolves first and then it recreates reality. Moving forward, let's talk about the secondary imagination. It is the power of secondary imagination that breaks reality into parts, reorganizes it into new form and creates artistic unity, right? ये secondary imagination की power है कि वो reality को parts में break करती है, फिर उसको reorganize करती है, right? और उसके basis पे एक artistic unity create करती है. The poet sees nature and recreate it into poetry, okay? Now let's differentiate between primary and secondary imagination so that this is clear to you. Talking about the primary imagination, it is the living power and a prime agent of all human perceptions. It is basic mental faculty through which we perceive the world, right? ये basic है, ये हर human being में available होती है. इसके through human दुनिया को देख पाता है, उसको समझ पाता है. जबकि जब secondary imagination की बात करें तो ये echo है primary imagination का. ये consciously operate करता है. ये एक creative art होती है और ये बेसिकली एक फैकल्टी होती है जो क्रिएटिव और पोएटिक फैकल्टी होती है और हर किसी में अवेलेबल नहीं होती है. सेकेंड, इट इज नेचुरल, यूनिवर्सल, ऑटोमेटिक, कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, द प्राइमरी इमेजिनेशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी, इट इज आर्टिस्टिक, क्रिएटिव एंड डेलिबरेट. इट इज फाउंड ओनली इन द पोएट्स एंड आर्टिस्ट, राइट? ये आर्टिस्टिक, क्रिएटिव और डेलिबरेट होती है और ये सिर्फ पोएट्स और आर्टिस्ट में पाई जाती है.
This form of imagination is unconscious, involuntary, it happens without effort, right? Primary imagination जो है वो unconscious और involuntary है nature में, और ये ऑटोमेटिक आती है, जबकि जब सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करें तो वो कॉन्शियस और वॉलेंट्री होती है, राइट? इट इज कंट्रोल्ड एंड शेप्ड बाय द पोएट. यहाँ पे जो ड्राइवर होता है इनवॉलेंट्री इमेजिनेशन का वो हमारा पोएट होता है. उसके पास ये सेकेंडरी इमेजिनेशन की सुपर पावर होती है, जिसके थ्रू वो पहले रियलिटी को डिसॉल्व करता है, बाद में उसको एक मच बेटर लेवल पे रिक्रिएट करता है. Now it receives and organizes sensory data and make perception possible. ये तो बेसिकली डे टू डे चीज़ों को हमें समझने में हेल्प करता है. जबकि जो हमारा पोएट होता है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, ही डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड रिक्रिएट्स रियलिटी, राइट? ही प्रोड्यूसेस पोइट्री एंड आर्ट. तो वो एक बेसिक चीज़ को, एक ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है. कौन? पोएट. और ये पावर क्या होती है? दिस इज द पावर ऑफ द सेकेंडरी इमेजिनेशन. It does not create art, rather only help us to experience reality. ये कोई भी आर्ट क्रिएशन नहीं करती है, ये सिर्फ क्या हेल्प करती है कि हम रियलिटी को एक बेहतर तरीके से जानें. जबकि जब हम सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करेंगे तो ये आर्टिस्टिक रियलिटी क्रिएट करती है, जो कि ऑर्डिनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करती है. दिस इज सेकेंडरी इमेजिनेशन, राइट? दिस इज द स्पेशल सुपर पावर ऑफ अ आर्टिस्ट, ऑफ अ पोएट. Then the primary imagination accepts reality as it is. It is reflective in nature. Whereas when you talk about secondary imagination, it reshapes reality. It is transformative in nature. तो हमारी secondary reality transform करती है, क्योंकि पहले वो dissolve करती है, फिर diffuse करती है, फिर recreate करती है. तो ये एक transformative process है. Now it has a limited creative role. Basic structuring है, कोई ज़्यादा creative role नहीं है, सब में available होती है. जबकि यहाँ पे it has ensymplastic power, very important. It has ensymplastic power, means it has the unifying power. It combines diverse elements into a organic whole. इसके पास पावर होती है कि ये बहुत सारे diverse elements को एक organic whole में combine कर देती है. Then it is repetition of divine act of creation. Whereas talking about the secondary imagination, it is high creative echo of divine imagination, creator-like figure, right? The poet here is treated as a creator-like figure. No artistic output is here in case of the primary imagination, but talking about the secondary imagination, it produces poetry, art, and symbolism. Talking about primary imagination, seeing a tree and recognizing it is basic primary imagination. But seeing a tree, you turn to a tree, you see that tree is a symbol of life. You compare it with life. Tree now can be recognized as a life. This is a poetic image. He's creating something new out of the image of tree. And what is it? He's creating life out of it. That is the power of secondary imagination. This is the ensymplastic power, the unifying power. He has the transformative power. So the primary imagination is the unconscious power of perception, while the secondary imagination is the conscious creative power that transforms reality into art. राइट? प्राइमरी एक अनकॉन्शियस पावर होती है जो हर किसी में अवेलेबल होती है, दुनिया को देखना आसान बनाती है. जबकि जब सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की जाए तो ये कॉन्शियस और क्रिएटिव पावर है जो रियलिटी को आर्ट में कन्वर्ट करती है, जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करती है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, जो एनसिम्प्लास्टिक होती है, जो यूनिफाइंग होती है. तो प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो एपिस्टेमोलॉजिकल फंक्शन प्ले करती है. हाउ वी नो द वर्ल्ड, that is the primary imagination. Talking about the secondary imagination, it has the aesthetic function, how we create art. I hope now the idea of primary imagination, secondary imagination, who gave it, when was it given, which was the age during which this idea was propagated, what is the difference between the primary and the secondary imagination, which is more powerful, which is basic and fundamental, how is it differentiating each other. And in the next class we will also be talking about how it is different from the idea of fancy, which was also brought about Coleridge in his work Biographia Literaria 1817. Thank you.